So in the previous session, we have discussed the various reasons of disintegration of USSR. We have discussed the major reasons behind the disintegration of USSR. We have discussed that economy was not doing properly, and there are other reasons that the policies of the government was not responsible for the citizens. We have discussed many reasons in the last session. Now, so finally, in 1991, USSR got disintegrated, and in this session, we will discuss the various consequences of that disintegration. What were the various consequences of this disintegration? The collapse of the Second World. As we all know that USSR was considered as the second world of the Soviet Union, and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics. Let us note here their broad kind of enduring changes that resulted from it. So let's discuss the various consequences of the disintegration of USSR. So the first one, it meant that end of Cold War confrontations. So the first very consequence is that the Cold War, which was started just after the Second World War, now come to end. जो कोल्ड वॉर जो दो सुपर पावर्स के बीच में जो कोल्ड वॉर था जो कि स्टार्ट हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, अब वो खत्म हो चुका था बिकॉज वन सुपर पावर has collapsed. एक सुपर पावर collapsed हो चुकी थी. The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalistic system was not an issue anymore. And the second, or in this we can say that there was means we can say that which ideology is better, the communist or capitalism. Capitalist, there was, we can say that ideological difference between the two superpowers, that which one is better than other, the socialist or capitalism. Now it is finally clear in all over the world that capitalistic system is better than the socialist system in many aspects. Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs. The end of the confrontation demanded an end to this arm and a possible new peace. Arm race. So, with the disintegration of USSR, what happened? First thing, the Cold War came to end. Second thing, which ideology is better, the capitalism or socialism? Now you can make the difference that which one is better. And the third one, you can say the arm race between these two superpowers also come to end. और दोनों ही countries के बीच में, दोनों ही super powers के बीच में जो एक arm race थी from last 70 years, because both were engaged in developing more and more advanced, more and more destructive, more and more nuclear weapons. So this race also come to end. So this is the consequence of the first consequence of the disintegration. Then second, power relation in world politics changed, and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. The end of the Cold War left open only two possibilities: either to remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out, the US became the sole superpower, backed by the power and prestige of the US. The capitalistic economy was now the dominant economic system internationally. Institutions like the World Bank and International Monetary Fund become powerful advisors to all the countries, since they gave them loans for their transition to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. Now you can see in the second part we are going to discuss two or three another points or another consequences of disintegration of the USSR. The first one is the means we
convert from bipolar to unipolar. Like after the disintegration of USSR, only superpower remained in the world, that is USA, United States of America, remained the sole superpower in the country. So from the second line, the end of the Cold War left open only two possibilities: either to remain superpower, would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries could become important player in the international system. So like after the disintegration of the USSR, the only superpower left in the world, that was the United States of America. और अब एक ही ऑप्शन रह गया था, either America is going to dominate the world, या तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा because America is the only sole superpower in the country, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर जो अदर कंट्रीज हैं वो इकट्ठे होकर दे मेक सर्टेन मोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वर्ट दिस यूनिपोलर वर्ल्ड इनटू द मल्टीपोलर सिस्टम. So, first thing is that United States of America remain the sole power, superpower in the world after the disintegration of USSR. Background power and prestige of US. And the second one is the capitalistic economy was now the dominant economic system internationally. Or the second thing is that the we can say the competition between capitalistic and socialist economy come to end, and the capitalistic economy was now the dominant economic system internationally. सिर्फ एक ही तरह का सिस्टम हम कह सकते हैं, that is the capitalistic economy system left in the world. And institutions like the World Bank and International Monetary Fund become powerful advisor to all these countries since they gave them loans for their transitions to the capitalism. This is very important because after the disintegration of USSR, most of the Eastern European countries were in their transition phase. They were in transition phase. What transition phase? They were converting from the socialist economy to the capitalistic economy. This phase is considered as the transition phase. They were converting their economic system from socialist to the capitalism. From communist to the capitalism, they were converting their economy. And in this their transition phase, because that transition phase was quite difficult for the Eastern European countries, because it is not possible overnight to change your economic system. Like overnight, you cannot change your economic system. So the international financial institutions like World Bank and International Monetary Funds, they provide assistance to these countries in their transition phase while they were converting from the socialist to the capitalistic economy. And it was also clear in the world that politically the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. And it was quite clear that the democratic values in United States of America were better than that of USSR. ये भी क्लियर हो गया था कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी as compared to the USSR, because in last slides we have discussed that USSR government, the Communist Party of USSR, was not accountable to their people, their citizens, वो इतनी accountable नहीं थी. On the other hand, the people or the citizen in Western bloc, they were enjoying more freedom, they were having more freedom, more fundamental rights. So ये clear हो चुका था. So from this second point, we have got 3 points. First one is that what happened after the disintegration. दो चीजें थी. First thing is that भाई या तो यूएस अकेला ही सुपर पावर रह जाएगा वर्ल्ड में एंड यूएस विल डोमिनेट द वर्ल्ड. अभी भी या तो यूएस जो है वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा एंड इट विल रिमेन द सोल सुपर पावर. द सेकंड थिंग, और ये भी हो सकता है कि जो अदर कंट्रीज हैं दे कैन मेक सम ऑर्गेनाइजेशंस, वी विल डिस्कस देम इन our next chapter also, that they will make certain kind of organizations like ASEAN, like SAARC, like BRICS, like European Union, जो कि किसको चैलेंज करेंगे, यूएस की हेजेमोनी जो दादागिरी है उसकी जो सोल डोमिनेंट है उसको चैलेंज करेंगे. Third one is which system is better. It was quite clear by now that capitalistic economic structure is better.
than the socialist structure. Means capitalistic economy have advantages over the socialist economy. And third thing which we got, that the transition phase. The transition phase means the Eastern European country, particularly the countries which were under the USSR. Now they were changing their economic system from the socialism to the capitalism, and this phase is termed as the ट्रांजिशन फेज. और उनको किसने हेल्प किया? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड financial as well as technical assistance to these countries in their transition phase. And the last point which we got from this para is that the politically it was also clear by that the democratic values are better in Western bloc as compared to the Eastern bloc. People in Western bloc have more freedom and more fundamental rights as compared to Eastern bloc. So these are some points which we got from this para. So next, discuss the next one. But the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries, and with the end of USSR, with the disintegration of USSR, what happened? Many new countries emerged in world. जितनी भी जो countries थी who were under the influence of USSR, they start coming out from the influence of USSR. They want to take their own decisions. They want to run their own economy. और अब उन्होंने बाहर आना स्टार्ट कर दिया था यूएसएसआर ब्लॉक से, तो बहुत सारी नई कंट्रीज जो है वो उस टाइम पे आ रही थी. All these countries had their own independent aspirations and choice, and they come out with certain kind of aspirations, certain kind of dreams. जब वो यूएसएसआर ब्लॉक से बाहर आ रहे थे तो वो कुछ अपने लिए कुछ ड्रीम्स, अपने लिए कुछ एस्पिरेशंस लेकर बाहर आ रहे थे. उनको लग रहा था कि नाउ वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजंस, नाउ वी आर फ्री टू टेक डिसीजन for our economic as well as for our political system. Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and become part of the North Atlantic Treaty Organization. और उनमें से कुछ कंट्री ऐसी थी, सी 12 कंट्रीज वर देयर, जिन्होंने तो क्या कर लिया, सीआईएस फॉर्म कर लिया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. उन्होंने क्या किया कि पुराने स्ट्रक्चर को बंद करके एक न्यू स्ट्रक्चर, दे कन्वर्टेड इनटू द न्यू स्ट्रक्चर एंड दे जॉइंड द सीआईएस. बट some other countries like the Baltic nation, I have told you in the last slides of the Baltic, Latvia, Lithuania, जो ये Baltic nations थे, इन्होंने clear cut ये clear कर दिया कि that they are going to join the European Union or European states. इन्होंने कहा कि हम तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे, मींस वेस्टर्न ब्लॉक को, वी आर गोइंग टू ज्वाइन द वेस्टर्न ब्लॉक, हम वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे. एंड दे आल्सो मेक इट वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू be a part of the NATO, North Atlantic Treaty Organization, which was made by United States of America. So they made their intentions very clear that we are not going with the CIS, and they were very clear that they are going to join the European Union and they are going to join the NATO. The Central Asian countries want to take advantage of their. Yes. क्या कह रहे बेटा? आई एम नॉट गेटिंग यू. हाँ, यूक्रेन. नहीं, बाल्टिक नेशंस ने ज्वाइन किया था, द 3 बाल्टिक नेशंस. उसमें मैंने लास्ट उसमें भी आपको बताया था, जस्ट अ मिनट, द 3 कंट्रीज वर देयर. Yes, Baltic states. Yes, these were the Baltic states. Yes, Mukta. The Baltic states were Estonia, Latvia, and Lithuania. The 3 states, Estonia, Latvia, and Lithuania, joined the NATO. The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US. And the Central Asian countries, लाइक तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज थी, ये अपने जोग्राफिकल लोकेशन का जो है बेनिफिट लेना चाहते थे, बिकॉज
इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है कि सेंट्रल एशियन है, दे आर नियर टू द यूरोपियन कंट्रीज। सो इन्होंने दोनों के साथ ही अपने जो है वो बनाकर रखे, अपनी टाइज को जो है एस्टेब्लिश करके रखा। दे वांट टू गेट एडवांटेज फ्रॉम बोथ साइड्स। इन्होंने सोचा कि हमें दोनों साइड से ही एडवांटेज जो है लेनी है। एंड देन China and other, thus the international states, so many new players emerge, each with its own identity, interest, arms, and political difficulties. So after the disintegration of USSR, what happened? Many new countries come out and come out in the world with their new aspirations and with their new ideas, and uh, now they are free to take decision for their economic as well as their political system. And now we will discuss what is shock therapy. Now this is very important. This is very important. So far what we have discussed the reason for the disintegration, and we have also discussed the various consequences of the disintegration of the USSR. Now that is what is shock therapy. It is very important. We will discuss about the shock therapy. क्या था ये shock therapy? The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalistic system. So, with the end of the uh, Communist Party, with the disintegration of USSR, now all the countries who were the part of USSR, now they were in their transition phase. वो अपने transition phase में थी. Transition phase here means that जो conversion phase था उनका, जो conversion time था, वो अपने economic as well as अपने political दोनों ही systems को वो change कर रहे थे. They were changing their both political and economic system. And that process was very painful. वो process बहुत ही painful थी, because it is not possible and it is not an overnight process कि आप एक structure जिसको आप last 70 years से you are following a structure from last 70 year, and now you are giving up that structure and try to adopt the new structure. अब आप उस structure को छोड़कर कोई नया structure जो है आप उसको adopt करने जा रहे हैं. So that process was very painful, and that process is known as the transition phase. अब जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वंस हु वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, नाउ चेंजिंग देयर इकोनॉमिक एज वेल एज देयर political system. Politically, they are moving toward more democracy and democratic values. Economically, they are converting their economy from authoritarian or socialist to the capitalistic system. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe, that was influenced by the World Bank and the IMF, may be known as shock therapy. और जो वो चेंज था, that change from socialism to capitalism, from authoritarian to democracy, that change is known as shock therapy. उस चेंज को ही हमने क्या बोला था? shock therapy. उसी चेंज को shock therapy बोला था. And who were helping? कौन हेल्प कर रहा था इन कंट्रीज को? who was providing financial and technical help to all these countries in their conversion phase? This is World Bank and IMF, International Monetary Fund. These two are the financial institution of the world. और ये दोनों ही उनको जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे इन देयर ट्रांजिशन फेज. उनके कन्वर्जन में उनको जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे. सो व्हाट वाज दैट शॉक थेरेपी और उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुई? वी विल डिस्कस हियर. So it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property, because in during USSR system, all the factor of production, all the resources were in the hand of government. Government was taking care of the production, demand and supply, all the things. But now they are inviting the private players. They are moving toward the privatization, क्योंकि वो ये देख चुके थे that government is not capable enough to fulfill the demand of the people.
क्या गवर्नमेंट अपने आप में सभी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही, सो दैट्स व्हाई दे वर मूविंग टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। और उन्होंने क्या किया, मींस लास्ट 70 ईयर से जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में थे, अब उनका प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जो इंडिया ने 1991 में उसी टाइम पर इंडिया भी हमने भी किसको अडॉप्ट किया था बेटा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने भी अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस टाइम पे किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बिकॉज we also got realized by 1991 that we have to move toward the capitalistic system of economy if we want to fulfill the demand of the people, because it is not possible for the government authority to fulfill all the demand of the people. So that's why they start moving toward the privatization. Now it is the time to sell out the government agencies, to sell out the government factories, to sell out the government organization to the private owners. Those particularly those organization which are sick, particularly उन organization को जो कि sick थी, sick here means who are not giving any profit, जहां से कोई भी profit नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको जंग लगा चुका था, रस्ट लग चुका था। अब टाइम था कि उन ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर दिया जाए, किसके अंदर, प्राइवेट ऑनर के अंदर, ताकि वो प्राइवेट ऑनर जो है उनको आगे ऑपरेट करें। Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. जो कलेक्टिव फार्म्स थे, एग्रीकल्चर, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, ट्रांजिशन फेज वाज देयर। जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, भाई सबको एक जगह दे दी जाती थी, कुछ फैमिलीज मिलजुल कर वहां पे काम करती थी, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन अमंग देम। बट उसको अब रिप्लेस किया जा रहा था प्राइवेट फार्मिंग लाइक इन आवर कंट्री वी हैव प्राइवेट फार्मिंग। हमारे पास अपने अपने अलग से खेत हैं और हम उन्हीं खेत के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द प्राइवेट फार्मिंग। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व a drastic change in the external orientation of these economies. Development was now emphasized through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essentially. Shock therapy was a drastic change in the history of the USSR, क्योंकि अब एक यूएसएसआर जो है वो 360 डिग्री पे उसकी इकोनॉमी को चेंज किया जा रहा था, द इकोनॉमी वाज चेंजिंग एट द 360 डिग्री अप्रोच। और अब डेवलपमेंट का मतलब ये था कि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है उनको जो है हमें अलाउ करें, एफडीआई को अलाउ करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हु आर मोर डेवलप्ड, जो कि उस टाइम पे उनसे ज्यादा डेवलप थी, उनको बुलाया जाए, उनको इनवाइट किया जाए, दैट कम टू आवर कंट्री एंड एस्टेब्लिश सम ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कैन एनकरेज एफडीआई, फ्री ट्रेड Rigam and foreign direct investment were to be the main engines of change. This also involved openness to foreign investment, financial opening up of or deregulation and currency convertibility. So, a lot of changes were going on there at that time, in particularly in Eastern European countries or USSR. सबसे पहली चीज क्या कर रहे थे, दे आर चेंजिंग देयर इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। What they are doing next thing, they are allowing the privatization, they are allowing the foreign direct investment and some other things. Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. और यूएसएसआर के टाइम में जितने भी उनके बीच में जो ट्रेड अलायंसेस थे अमंग वेरियस, लाइक जो यूएसएसआर कंट्री थी, पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके अपने ट्रेड जो अलायंसेस थे वो अब खत्म होने लग गए थे, क्योंकि each country was busy in changing their economic system. Each state from this bloc was now linked directly to the west. और अब सभी जितनी भी कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन जो भी कंट्रीज थी, who came out from the USSR structure, अब उन्होंने अपने सीधे सीधे रिलेशन जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ दे स्टार्ट गेटिंग फाइनेंशियल एड, टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, और उन्होंने अपने आप को मीन्स जो एक जो डिफरेंस था उसको उन्होंने अबॉलिश करके, उसको उन्होंने खत्म करके, दे स्टार्ट मेंटेनिंग डायरेक्ट रिलेशंस।
with the वेस्टर्न कंट्रीज, और वेस्टर्न कंट्रीज से उन्होंने अपने डायरेक्ट रिलेशन जो है बनाने स्टार्ट कर दिए थे. Each state from this block was now linked directly to the west and not each other in the region. क्योंकि उनको पता था कि हम सभी तो एक ही कश्ती के सवार हैं, और हमने तो लास्ट 70 ईयर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की नहीं. तो अगर इफ यू वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमिक सिस्टम, तो हमें किससे हेल्प लेनी पड़ेगी? वेस्टर्न कंट्रीज से. द वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट नाउ बिकम द लीडर्स एंड दस गाइड on the development of region through various agencies and organizations. And Western countries were also helping the Eastern countries in their economic development. So basically that period of change is known as shock therapy. ये जो ये change का जो period था, इसको हम क्या कहते हैं? Shock therapy. Next we need. Now, what were the effect of this shock therapy? इसके कुछ positive थे और कुछ negative effects भी थे. You know, consequences of shock therapy. So because if we move to a rapid change, see देखिए, see change जो है, change is a gradual process. Change एक gradual process है. Change एक step by step process है. Because when Gorbachev introduced the changes, जो गोरबाचेव ने चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, तो उस टाइम उनको ये कहकर क्रिटिसाइज किया गया कि आपकी जो चेंज पॉलिसी है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है. इट इज क्वाइट स्लो. वी वांट फास्ट चेंजेस. इवन बोरिस येल्सिन जो है, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया गोरबाचेव को कि आपकी जो चेंज पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्लो है. इस हिसाब से अगर हम चेंज करेंगे तो इट टुक मैनी ईयर्स. बट rapid change is also not good because change is a gradual process. चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. अगर वो स्टेप बाय स्टेप हुए तो बेटर है. एकदम से अगर इफ यू वांट टू चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट, इट विल गिव सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस. अगर हम किसी भी चीज को ओवरनाइट चेंज करने की सोचेंगे तो ऑब्वियसली उसके कुछ बैड इफेक्ट्स, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारे आगे आएंगे, और उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे आगे आएंगी. तो जो शॉक थेरेपी था, जो ट्रांजिशन फेज था, दैट वाज क्वाइट रैपिड. वो बहुत ज्यादा तेज था. दैट्स व्हाई उसकी अपनी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आई. क्या क्या आई? इट ब्रॉट ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. और जो वो चेंजेस थे, उनका पेन किसको फील करना पड़ा? जो आम लोग थे उस रीजन के, उनको. इन रशिया क्या हुआ? रशिया में द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड as about 90% of its industries was put up for sale to private individuals and companies. अब देखिए, जितनी भी कंपनीज थी रशिया में, who was taking care of these industries, government was taking care of these industries, but now the government put all these industries for sale. अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सारी इंडस्ट्रीज हम इनको सेल आउट करना चाहते हैं, और प्राइवेट ऑनर्स वहां पर आने लगे उनको खरीदने के लिए. सो व्हाट हैपन इन रशिया? देयर वाज अ टाइम वहां पे प्रोडक्शन किसी भी चीज का जो इतना सारा डेवलप करता था जो रशिया, वहां पर प्रोडक्शन जो है वो चौक हो गया, वो कोलैप्स हो गया. और 90% जो इंडस्ट्रीज थी हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट make an offer to sell them to the private owners. उन्होंने बोला कि अब हम इनको private owners को sell करते हैं. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. This was called the largest garage sale in history. और जो ये phase था when Russian government was selling its industries to the private owners, और जो वो प्राइवेट ऑनर्स को जब वो अपनी इंडस्ट्रीज को बेच रहे थे ना, तो वो किसके थ्रू थे? रिस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू द मार्केट फोर्सेस. डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स, जिसके पास जो पैसा है वो आएगा, वो उसको खरीदेगा. उसमें कोई गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं था. तो उस फेज को क्या बोला गया था? द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री. उसको लार्जेस्ट गैराज सेल बोला गया था हिस्ट्री की, while Russia was selling its industries to the private owner, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को, जो कि बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी, उनको बिल्कुल ही थ्रो अवे प्राइसेस में बहुत ही कम
लो प्राइसेस में सेल आउट कर दिया गया। एंड और उस टाइम पे क्या चल रहा था, दो ऑल सिटीजन वर गिवन वाउचर टू द पार्टिसिपेट इन द सेल, सेल वर ऑन द टेंडर बेसिस पे सेल चल रही थी। मींस न्यूज़पेपर्स में दिए जाते थे आर्टिकल फॉर द सेल ऑफ इंडस्ट्रीज, अपने अपने सभी अप्लाई करते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर इन ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। और सपोज कीजिए, देखिए उस टाइम पे वहां पे करप्शन भी बहुत चल रहा था रशिया में, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट के नियर डियर पर्सन थे, हु आर हैविंग गुड रिलेशन विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जिनके अच्छे रिलेशन थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, दे परचेज्ड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद देयर इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर, उन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को जो है वो खरीदना स्टार्ट कर दिया। एंड वाउचर, सपोज मैंने भी अप्लाई किया, सपोज आई अप्लाइड टू टेक पार्ट इन द सेल प्रोसेस, जो ऑक्शन प्रोसेस है, मुझे उसमें टेक पार्ट करना है, तो आई गॉट सम वाउचर्स। और लोगों को उस टाइम पे बिकॉज इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग गुड इन दैट टाइम, रशिया प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे थे, तो इंडिविजुअल्स जो है वो अपने वाउचर को दूसरों को सेल कर देते थे कि मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, take my voucher and you can take part in that auction. So that was the scene in Russia that time. So basically, what was the garage sale? Garage sale, that good industries in Russia were sold on very low prices at that time. The value of the ruble, the Russian currency declined dramatically. और जो वैल्यू थी रूबल की, जो कि रशियन करेंसी है, अब वो डे बाय डे जो है वो डाउन आने लगी एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर, एज कंपेयर टू द अदर लीडिंग करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जो लीडिंग करेंसीज थी वर्ल्ड की वो अब डाउन आने लगी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, मींस जो नॉर्मल लाइफ की जो चीजें थी वो भी बहुत ज्यादा अब महंगी हो चुकी थी, एंड people lost all their savings. The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started import food. And the situation in Russia was that Russia has to import the food. Russia को food भी import करना पड़ रहा था. That was the situation in Russia. Then there are some other consequences. We will discuss all these consequences in our next class. You should read out all these consequences. I will send you the PPT. So now it is time for doubt session. If you have any doubt, you can take your doubts. Yes, take your doubts. No doubt, please speak out. Disintegration, third part. Okay. This one, इसकी बात कर, हाँ, लास्ट इससे पीछे, दिस वन, हाँ। एक्चुअली व्हाट वाज देयर, जितने भी जो ईस्टर्न ब्लॉक में जितनी भी कंट्रीज, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कि अब यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर आ गए, सॉरी यूएसएसआर से बाहर आ गई थी, दे स्टार्ट मेकिंग देयर रिलेशन डायरेक्टली विद द वेस्टर्न कंट्रीज। और उनमें से जो तीन कंट्रीज जो बाल्टिक नेशंस थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और नेटो को ज्वाइन कर लिया। जो कभी वर्सावा पैक्ट के पार्ट थे, अब उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, नेटो को जो है उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। मींस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, once they were the part of USSR system, Warsaw Pact, now they start maintaining their relation with the Western countries, particularly with United States of America and other countries. Okay. Yes. Any other doubt?